Hello friends, welcome back. We are now on the third part of the topic inventories. We have covered various topics on inventories. Now today we will be covering joint product and byproducts. Now what do you mean by a joint product and what is a byproduct? Let's go through. A production process may result in more than one product being produced simultaneously. When a group of individual product is simultaneously produced and each product has a significant relative sale volume, the outputs are usually called joint products. मतलब दो प्रोडक्ट एक साथ निकलते हैं उसी प्रोडक्शन प्रोसेस में और दोनों के अपने सेल वैल्यू हैं, दोनों अपने हिसाब से बाजार में बिक सकते हैं, दोनों का अपना एक रियलाइजेशन वैल्यू है, उसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स. Those products which are simultaneous production process and have a minor sale volume or insignificant sale volume are called byproduct. बाय प्रोडक्ट क्या है? जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेन प्रोडक्ट के साथ ये भी प्रोडक्ट निकलेगा और इसका प्रोडक्ट का सेल वैल्यू या तो कम होगा या सेल वॉल्यूम कम होगा या इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट, तो इसको कहते हैं अपने बाय प्रोडक्ट. एम आई क्लियर? In case of a joint product, when the cost of conversion of each product are not separately identifiable, they are allocated between the products on rational and consistent basis. The joint cost may be allocated on the basis of relative sale value of each product, either when they complete or when they are separately identifiable in the production process. इसका क्या मतलब है? In case of joint product, when the cost of production of each product are not separately identifiable, आप joint product जब निकलती है तो जनरली उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाइबल नहीं हो पाता है. तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाइबल नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं? उसको हम लोग रैशनल बेसिस और कंसिस्टेंट बेसिस में उसको कंसिडर करते हैं. ठीक है? दे आर एलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑन अ रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस. अब क्या रैशनल और कंसिस्टेंट बेसिस हो सकता है? जो भी जॉइंट कॉस्ट है, द जॉइंट कॉस्ट में बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट, ईदर व्हेन दे आर कंप्लीट और when they are separately identifiable in the production line. ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉस्ट कैसे एलोकेट करेंगे, कब करेंगे और किस तरह से करेंगे. कॉस्ट, वी विल एलोकेट द कॉस्ट बेस्ड ऑन द सेल वैल्यू ऑफ ईच बाय प्रोडक्ट, ईच जॉइंट प्रोडक्ट, सॉरी. सो when the joint product is identifiable, at that point of time we can bifurcate the cost, or when the joint products are completed, at that point of time also we can bifurcate or allocate the cost of the products accordingly. Am I clear? Now, for example, Haldia Petrochemicals Limited incurs per batch joint product cost of rupees 30 lakhs for the production of two joint products X and Y. Both can be sold at a split off point. Okay, X can be sold at rupees 80 per kg, whereas Y can be sold at rupees 40 per kg. The production per batch is of X is 50,000 kg and Y is 50,000 kgs. यहाँ क्या है?
एग्जाम्पल, एक कंपनी है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, वो पर बैच, एक बैच प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे 30 लाख रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। उसमें एक जॉइंट प्रोडक्ट निकलता है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। बोथ प्रोडक्ट्स आर स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स। बोथ प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स। जिस समय वो स्प्लिट होते हैं या जिस समय वो दोनों अलग अलग आइडेंटिफाइबल होते हैं, उसी पॉइंट पे वो दोनों बिकने के लायक पोजीशन में आ जाते हैं। तो बोथ प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। X can be sold at 80 per kg and whereas Y can be sold at 40 per kg. Am I clear? ऊपर में हमने क्या बोला था, कैसे हम लोग इस कॉस्ट को तोड़ेंगे? हाउ विल वी ब्रेक द कॉस्ट? द जॉइंट कॉस्ट में बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट, either when they are complete or when they are separately identifiable in the production process. यहां पे क्या है? Is it identifiable in the production process? Yes. X and Y, we have got two products. Secondly, the joint cost may be allocated on the basis of relative sale value of each product. Now, the sale value of X is 80, whereas the sale value of Y is 40. So, moving forward, how will we allocate the cost, that is 30 lakhs, to these products? Here, in this case, the joint cost of rupees 30 lakhs will be allocated as follows. Joint product cost 30 lakhs. X produces 50,000 units at the rate of 80 rupees it can be sold. So 40 lakh rupees. And Y is 50,000 units at the rate of 40 rupees, that is 20 lakhs. So total sale value is at split of point is 60 lakhs. So product X should bear 2/3 of the cost, that is 30 lakhs divided by 3 into 2, 20 lakhs, and product Y should bear 1/3 of the cost, that is 30 lakhs divided by 3 into 1, that is 10 lakhs. Therefore, per unit production cost is, for product X, it's 20 lakhs divided by 50,000, that is 40 rupees per unit. Whereas for production Y, it is 10 lakhs divided by 50,000, that is rupees 20 per unit. Am I clear over here? If you have any doubts, please pen down and message me, please. Most byproduct as well as scrap or waste materials by its nature is immaterial. If this is the case, it is measured at realizable value and this value is deducted from the cost of main product. अब बाय प्रोडक्ट का क्या करेंगे? अपने जो बाय प्रोडक्ट होते हैं या जो स्क्रैप होते हैं, जो वेस्ट होता है, उसका दो हिसाब है। इसका कोई ये नहीं है, आप इनसिग्निफिकेंट रियलाइजेशन वैल्यू रहता है, द वैल्यू उतना सिग्निफिकेंट रहेगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एनआरवी पे मेजर करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, कि ये सामान हम क्या रेट में बेच सकते हैं, उसको उस प्रोडक्ट का कॉस्ट से हम लोग माइनस कर देंगे। एम आई क्लियर? Most byproducts as well as scraps or waste materials by its nature is immaterial. If this is the case, then it is measured at realizable value and this value is deducted from the cost of the main product. Any confusion? Let's move. Other costs. Now what is other costs? Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventory to the present location and condition.
These would include inward transportation, storage prior to completion of production, or the cost of designing products and for specific customers. Are we clear? Other cost क्या है? Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventory to the present location and condition. Okay? These would include inward transportation, storage prior to completion of production, or the cost of designing products for a specific customer. If you have any query, please send me a message so that I can clarify it. Cost excluded from inventories. अब इन्वेंट्री से क्या क्या कॉस्ट अपने एक्सक्लूड करते हैं, लेट्स discuss the same. To determine the cost of inventories, it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expenses in the period in which they are incurred. समझ गए? हम लोग कुछ कॉस्ट को बाद देके उसको खर्चा के रूप में ट्रीट करेंगे पीएल अकाउंट में जिस साल में वो इनकर हुए हैं. What are those? First is abnormal amount of wasted materials, labor or other production cost. Abnormal, कोई भी चीज एक नॉर्मल तरीका में से अगर अलग हटके होता है. आज सपोजिंग आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आपका नॉर्मल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट है और उस अनुसार आपका लेबर लगता है और आपके अदर खर्चाएं लगते हैं. करेक्ट? पर डे लेबर उसी हिसाब से बाइफर्केटेड है, प्रोडक्शन कॉस्ट उसी हिसाब से बाइफर्केटेड है, इलेक्ट्रिक उसी हिसाब से है. सो नाउ ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस योर प्रोडक्शन ड्रॉप्स टू से 5,000 विच इज एन अबनॉर्मल प्रोडक्शन. सो जो 5,000 का लॉस हो रहा है वो आपका प्रोडक्शन लॉस एबनॉर्मल है. एम आई क्लियर? अब यहां हम लोग क्या बोल रहे हैं? एबनॉर्मल अमाउंट वेस्टेड मटेरियल्स. व्हाट इज एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल्स? सपोजिंग आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, आपका नॉर्मल वेस्टेज से 5% है. आप 10 रुपया का सामान डालते हो, 5% उसका वेस्टेज है और बाकी आपको आउटपुट मिल जाता है. आपने 10 किलो डाला, उसका 5% वेस्टेज निकल गया, बाकी आपको से 500 ग्राम वेस्टेज निकल गया, 9.5 किलो आपको फ्रेश माल मिल गया. अचानक कुछ मशीन में प्रॉब्लम आने के कारण आपने 10 किलो ही माल डाला पर माल वेस्ट हो गया 4 किलो. तो वेस्टेज क्या हुआ? वेस्टेज इज एबनॉर्मल. नॉर्मल वेस्टेज आपका 500 ग्राम है, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या हो गया? 3.5 किलो एक्स्ट्रा है. तो अब ये 3.5 किलो एक्स्ट्रा वेस्टेज हम लोग हटा देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स से, उसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्स्ट्रा वेस्टेजेस इन पीएल अकाउंट. दैट इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पीएल अकाउंट. इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द cost of production of these goods. Storage cost, unless those costs are necessary in the production process prior to a further production stage. Clear? अगर हम कोई ऐसा अनवांटेड स्टोरेज कॉस्ट इनकर करते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको हम एक्सपेंसेस में डालते हैं. सपोजिंग मैं माल ला रहा था, ठीक है, कैरेज में ला रहा था माल, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया कहीं पे. ओके, व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया और इमीडिएटली कोई व्हीकल, सेकेंड व्हीकल वी आर नॉट एबल टू प्रोक्योर टू ट्रांसफर द मटेरियल एंड ट्रांजिट इट. इट विल टेक अनदर 10 to 15 days फॉर गेटिंग अ व्हीकल. सो दैट टाइम you unload the product, you hire a place, you unload your product, and then again you load your product after 15 days. So that storage is not in the normal course of business. That storage cost
unless those costs are necessary in the production process. That storage was not necessary in the production process, but you had to incur it in order to save your materials. So that storage cost will be considered as expenses in the year it has been incurred. Third, administrative overheads that do not contribute to bringing the inventories to their present location and condition. Now, what are administrative overheads? Supposing your accounts department, that expenses are not attributable directly to bringing the inventories to the present location and conditions. Is it required? No. Next, your other selling team, that is not required. That expenses are not required to be included in the cost because they directly do not attribute to bringing the inventories to the present location and condition. And the fourth is selling and distribution cost. As I told you, a selling team, supposing you to sell the items, you have certain schemes कि भाई आप 50,000 माल ले लो, 50,000 यूनिट खरीदो, मैं आपको 1,000 यूनिट फ्री दूंगा या 500 यूनिट फ्री दूंगा. तो दैट इज अ स्कीम. नाउ आई हायर say 10 people to sell the product for me. I have a distribution chain. Supposing I rent out 2 to 3 godowns in 3 different places so that I can store the materials there, and from there I can distribute it for easy selling and for easy distribution of material. So that cost, that selling tree is not to be included in the cost of inventories. Am I clear? If you have any doubts, please do send me messages so that I can clear you. Let's discuss some examples and we will close this chapter here. Okay? When valuing the stock at cost, which of the following shows the correct method of arriving at cost? Now there are two things: include inward transport cost, include production overhead cost. A. When valuing the stock at cost, which of the following shows the correct method? Now two costs are written: include inward transport cost, include production overhead cost. Now there are four steps, four things, four options: A, B, C and D. Option A, yes, no. Option B, no, yes. Option C, yes, yes. Option D, no, no. Now tell me, without going to the answer, what should be the correct answer in this? At the time of valuation of stock at cost, inward transportation cost as well as production overhead are to be included. Am I clear? Therefore, answer C is correct. Answer C में both option yes and yes था. Clear? Now इसी का breakup 2. According to AS2 inventories, which of the following costs should be included in valuing the inventories of a manufacturing company? AS2 के मुताबिक which of the following costs should be included in valuing the inventories of a manufacturing companies? Carriage inward, carriage outward, depreciation of factory plant and machineries, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. क्या ये चारों जाएंगे? ऑल फोर ऑफ द आइटम्स. बी 1, 2, 4. सी 1, 3 and 4. And D 1 and 3 only. Tell me. So the answer is, for determining the cost of inventories, carriage inward and depreciation of factory plant and machineries are to be taken.
However, carriage outward and general administrative overheads will not be taken into consideration. Therefore, answer D is correct. Any one of you who guessed it right? Please comment. Example 2. Which of the following costs may be included while arriving at the cost of finished goods inventory for inclusion in the financial statements of a manufacturing company? Number A, carriage inward, carriage outward, depreciation of factory plant and machineries, finished goods storage cost, and factory supervisor salary. Option A, all five. Option B, 1 and 5. Option C, all except 4. Option D, all except 2 and 4. So, any guesses? Let's do the answer. For calculating cost of finished goods, inventory carriage inward, depreciation of factory, factory supervisor salary are included. However, carriage outward and finished goods storage costs are excluded. Therefore, answer D is correct. So friends, if you like my video, if you understand what I'm telling, if you like it, if you want me to make more videos, please like my videos, subscribe my videos and share my videos. Take care.